नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी प्यारे दर्शकों का मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। कुछ फेस्टिवल और कुछ अभी आ रहे हैं, तो उस कारण से कभी कभी हम ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। 88 एपिसोड है प्रभु से खास बात। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी प्यारे दर्शकों का मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं। दोस्तों दोस्तों आगे बढ़ते हुए आज खास सब्जेक्ट है हमारा। हम अवेयर कर रहे हैं और ये हमारा 88 एपिसोड है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन फेवर ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस नए लिंक पर आप ये आज का हमारा 88 एपिसोड देखें। और तो आगे बढ़ते हुए मैं यही कहूँगा, और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। दोस्तों, आज हमारा सब्जेक्ट है ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन फेवर ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। मिस्टर अमर खन्ना जी एडवोकेट सॉलिसिटर हैं, जो महासेवा से एसोसिएट है, वो जुड़े हुए हमारे साथ इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। अमर खन्ना जी, आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप पिछले 20 सालों से अमर खन्ना जी मुंबई में तमाम कन्वेंस के इश्यूज हो, लिटिगेशन के इश्यूज हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड रेरा हो, या तमाम विषय के जो एनसीएफटी या तमाम दूसरी जो रियल एस्टेट की कोर्ट होती है, वहां पर एज ए कस्टमर के बिहार पे, स्टेक होल्डर के बिहार पर फाइट करते हैं एडवोकेट सॉलिसिटर अमर खन्ना जी। दोस्तों, उनका स्वागत करता हूं मैं इस खूबसूरत लाइन के साथ में, और आप सभी तमाम जो लोग हैं, ऑडियंस है, हमारे प्यारे प्यारे दर्शक, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। शकील आजमी साहब बड़ी मोटिवेट लाइन बोलते थे। उनकी लाइन थी कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा 88 एपिसोड है, और इसमें जीत होनी चाहिए, और हम तमाम आप जो कन्वेंस से रिलेटेड या ट्रांसफर, आप जो आपका टाइटल है सोसाइटी का, आप रीडेवलपमेंट में जाना, तो आपकी जीत हो, इस शुभकामना के साथ हमारे अमर खन्ना जी हैं, उनका नाम ही अमर है, तो वो भी आपको जीत दिला सकते हैं कोई तमाम विषय पे। तो आज वो जीत दिलाने वाले हैं आपको कि आपका टाइटल किस तरह से आपके फेवर में, आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में क्या प्रोसेस है, उसका ट्रांसफर का क्या तरीका, कन्वेंस का, वो सब बताने के लिए मैं अमर खन्ना जी को इनवाइट कर रहा हूँ। अमर जी, प्लीज वेलकम। गुड आफ्टरनून। मेरे को जरा Yes. पीपीटी शेयर करने का वो। यस, एक यस सर, गो एट। हाँ, एक मिनट। हेलो। यस सर, हाँ, ये मैं जरा ओपन कर रहा हूँ। ओपन कीजिए आप, मैं बताता हूँ।
आपका प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है अमर जी। अमर खन्ना जी। अमर खन्ना जी। दोस्तों जीवन में घर का बड़ा ही इम्पोर्टेंस रहता है, बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। और हम हमेशा आपके घरों की, हमारे जो हाउसिंग गुरु है रमेश प्रभु जी, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और ये लाइव शो इस तरह के जो डिजिटल पर हम प्लेटफॉर्म लेके आए हैं पिछले 2 साल, लगभग नवंबर दिसंबर में दूसरा साल हो जाएगा। तो MNS मीडिया न्यूज सर्विस एक न्यूज एजेंसी है जिसके चेयरमैन चीफ एडिटर में हूँ, और हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी महासेवा के चेयरमैन, दोनों ने मिलकर एक ये अवेयरनेस सीरीज शुरू की है, प्रभु से खास बात। प्रभु से खास बात मतलब जो एक सब्जेक्ट है, कन्वेंस, डीम कन्वेंस, रीडेवलपमेंट, MCS, अदर्स जो भी हाउसिंग सोसाइटी रियल एस्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट है, टाइम टाइम पे हम लेके आते हैं। और यदि कुछ सजेशन ऑब्जेक्शन है बिहाफ ऑफ स्टेक होल्डर पब्लिक की तरफ से, वो हम सरकार तक पहुंचाते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में यदि आपको कनेक्ट होना है तो मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आ सकते हैं, आपको इन सब चीजों की अपडेट मिलती रहेगी और एडवांस में हम सवाल भेजेंगे। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म का, प्रभु से खास बात का यही मकसद है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो, एजुकेट हो। और आज का सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन फेवर ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अमर खन्ना जी कुछ ही मिनटों में जुड़ेंगे, तो निश्चित ही आप मुझे, आप मेरे नंबर पर वो करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, आप कहाँ से हैं, आपका नाम, तो आपको मैं मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ऐड करने के आपको बेनिफिट है कि आपको तमाम जो चीजें हैं वो मिलती रहेगी। कल हमारा एक अवार्ड फंक्शन है यशवंतराव चौहान हॉल में, तो दोस्तों आप आकर वहां पर अपडेट ले सकते हैं, आप उन सब्जेक्ट पर अवेयर हो सकते हैं, एजुकेट हो सकते हैं। तो एक जबरदस्त नॉलेज शेयरिंग का प्लेटफॉर्म है दोस्तों, तो आप इससे कनेक्ट हो और देखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पिछले 2 सालों से, कोरोना 2 अढ़ाई 3 सालों से, कोरोना के टाइम में तमाम जो लोग आप लोग कनेक्ट होते हैं, तो उससे काफी सारी चीजें आपको आपकी लाइफ में, जीवन में आपको अपडेट कर सकती है। और ये आजकल का डिजिटल का समय है, और डिजिटल के समय में आप घर बैठे किस तरह से अवेयर हो सकते हैं, ये एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है महासेवा का और MNS मीडिया का। अभी हम कुछ लोगों से और बड़े लोगों से, BDA बृहन मुंबई डेवलपर एसोसिएशन भी अवेयरनेस के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में कुछ देखेंगे आप। तो इसलिए आपको इन तमाम विषय के धुरंधर लोगों का इस पे ज्ञान मिलेगा ये प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आप मुझसे जुड़ गए तो वो सब प्लेटफॉर्म पे सब चीजों से जुड़ गए, सब स्पीकर से आप जुड़ जाएंगे। तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करें, मेरा नंबर है 9920378133। तो ये मेरे जो सहयोगी हैं वो आपको शेयर भी कर देंगे चैट बॉक्स में। लेकिन अभी हमारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमर खन्ना जी।
अमर खन्ना जी सीनियर एडवोकेट हैं और तमाम विषय के जानकार हैं, कन्वेंस और रेरा और तमाम जो लिटिगेशंस होते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, उन तमाम विषय के पिछले 20 सालों से एडवोकेट सॉलिसिटर अमर खन्ना जी को मैं इन सब्जेक्ट पर ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन फेवर ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कि आपकी सोसाइटी का कन्वेंस कितना मायने रखता है, आपको रीडेवलपमेंट जाना है, वो बताने के लिए तैयार हैं। और मैं स्वागत करता हूं अमर खन्ना जी का। प्लीज वेलकम अमर खन्ना जी। बकायदा उन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन भी बनाया, आप उनसे उनकी पीपीटी भी प्राप्त कर सकते हैं मुझसे, यदि मुझे आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो। अमर खन्ना जी आपका स्वागत है। यस सर, वीडियो प्रॉपर करें आप प्लीज, वीडियो आपका प्रॉपर करें। हाँ, मैं एक्चुअली मोबाइल से ज्वाइन किया है। ओके सर, ओके, नो इश्यूज। आप हाँ, पीपीटी नहीं भी शेयर करेंगे तो हम हमारे जो लिसनर्स हैं, जो ऑडियंस है, उनको बाद में शेयर कर देंगे। आप हाँ, पीपीटी देख के बोल सकते हैं। प्लीज वेलकम। और आगे के सब्जेक्ट के लिए जो हाउसिंग सोसाइटी का रीडेवलपमेंट आज जोरों में चल रहा है, उस जोरों में चलने के लिए आपका कन्वेंस, आपका टाइटल होना जरूरी सोसाइटी का। उस बारे में अमर खन्ना जी, आप इतने सालों का अनुभव है आपका, और एज पर अमेंडमेंट क्या है, नई नई चीजें क्या है, नई सरकार कुछ और नए रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट के नए नए कुछ चीजें लाने वाली है, तो आप एक आम आदमी को, हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को समझना हो कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन फेवर ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो ये किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से ब्रीफ करेंगे सर? प्लीज वेलकम। हाँ, हेलो, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी ये जो हुआ उसके लिए। देखिए, बेसिकली कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कन्वेंस होना बहुत जरूरी है। इसका महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस कई बार मेंबर्स को नहीं लगती है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक फ्लैट की ओनरशिप और एक रेंटेड फ्लैट, दोनों में डिफरेंस है। ओनरशिप का मतलब ही ये होता है कि आप जो करना चाहें, यू कैन डील विद इट इन द मैनर इन व्हाट यू वुड लाइक इट टू बी। आप अपने बायलॉज भी देखेंगे तो बायलॉज जो है वो those also basically it is towards the angle that ultimately the society should get the conveyance in its favor. What is a conveyance? Basically, conveyance is transfer of title of land and building by the promoter or the landowner in favor of the housing society by execution of a conveyance deed. इसका मतलब ये है कि आपकी जो लैंड है और जो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है, आपकी एक बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग्स है, उसका टुगेदर कन्वेंस आपके फेवर में टाइटल आ जाना चाहिए, आप उसके ओनर बन जाने चाहिए। एक बार आप वो प्रॉपर्टी के ओनर बन गए, द प्रॉपर्टी बिकम्स फ्री एंड मार्केटेबल। That means you are free to deal with the property in the manner you deem fit and proper. एक बार आपको कन्वेंस मिल गया, फिर आप पीआर कार्ड पे अप्लाई करके पीआर कार्ड पे अपना नाम ट्रांसफर करा सकते हैं। उसके बारे में सेकेंडली, आप अपने खुद के डिसीजंस ले सकते हो। आपको ओपन स्पेसेस कैसे यूज करने हैं, गार्डन्स कैसे यूज करने हैं, टेरेसेस, पार्किंग स्पेसेस एक्सेट्रा, हाउ यू वांट टू यूज,
you can take your own decision. Thirdly, you can use the additional FSI as per the government announcements from time to time. You are not dependent on the owners. If you want to do repairs or reconstruction or any further construction, suppose you want to increase the floors or anything, if you are the owner of the land, if you are the owner of the property, you have the conveyance, you can raise even loans for the such repairs and reconstruction. Then you can take benefit of any additional FSI. Like अभी DCR 1991 से DCPR 2034 आया है. DCPR 2034 में काफी बेनिफिट्स FSI काफी बड़ा है कई प्रॉपर्टीज में, तो वो बेनिफिट आप ले सकते हो अगर आपके पास कन्वेंस है तो. नेक्स्ट, इवन द प्लानिंग अथॉरिटीज लाइक द BMC एंड अदर अथॉरिटीज, समझ लीजिए आपका सेटबैक हो रहा है, तो सेटबैक का बेनिफिट ओनर को दिया जाएगा. रोड सेटबैक वगैरह ये सब चीजों के बेनिफिट्स ओनर को दिए जाते हैं. तो अगर कन्वेंस आपके फेवर में है तो इस चीज का भी बेनिफिट आपको मिलेगा, ना कि ओनर को. एक उदाहरण के तौर पर अभी a few days back मिड डे में एक रिपोर्ट आई थी तारिक बिल्डिंग के बारे में. This building, they collapsed on 24th August 2020. This was basically a ground plus 5-story structure in Mahad. The survivors of this collapse, actually, they are still left without a roof because the owner is not giving his consent for redevelopment of the property. So even though the members of the society have purchased the ownership, the flats, but still they are not the owners and they cannot exercise the rights of the owners. This is where the whole importance of the transfer of title, the whole importance of conveyance deed arises. If this Tariq building would have the conveyance, then it would have got the redevelopment done on its own. But now it is dependent on the actual owner of the property. Further, what happens if the society does not obtain the conveyance? If the society does not obtain the conveyance and the ownership lies with the owner may at any time mortgage the property to any banks or financial institutions. In that sense, then your property does not remain clear and marketable. Secondly, if at all any future FSI or TDR benefits arise, he can make commercial benefits out of it. He can seek any amendment, the owner can seek any amendment of the plans from the concerned planning authorities for construction of new building or structures on the said property. Of course, there are judgments under Section 7 of MoFA which say that the society's consent is required if at all it is not disclosed. But practically, there are very few societies who go to court of law. And you have to fight for it then. Similarly, the promoter or the landowner may even sell the entire development rights to any other developer or any third party. Then he may make use of open spaces, gardens, terraces, parking spaces, etc. If after a few years you ask for a conveyance, the owner may even ask, and which happens, we have seen cases wherein the owner and the promoter, they have asked for money for giving the conveyance in favor of the society. Now, let us see what are the statutory provisions. Section 11(1) of the MoFA, means the Maharashtra Ownership of Flats Act 1963, provides that a promoter shall transfer the title to the society in accordance with the agreement executed therein. And if no period for execution of conveyance
is agreed upon, then the promoter shall execute the conveyance within the prescribed period. The prescribed period is provided in Rule 9 of MoFA rules, wherein it is provided that the conveyance shall be executed within 4 months from the date of formation of the cooperative society. Although this is provided, practically this does not happen. Now, in 2017, the Real Estate Regulation and Development Act 2016 came into enforcement. Section 17 of the Act provides that the promoter shall execute a registered conveyance deed within specified period as provided under the local laws, provided that in the absence of any local law, conveyance deed shall be carried out by the promoter within 3 months from the date of issue of occupancy certificate. It is further provided that in case of a building or a wing of a building in a layout, the promoter shall, subject to his right to dispose of the remaining apartments, if any, execute the conveyance of the structure of that building or wing of that building, excluding basements and podiums, within 3 months from the date of issue of occupancy certificate. So, if it is a layout and there are several buildings proposed, what the promoters used to earlier do is, until my last building is constructed and I get the occupancy certificate, and I sell all the flats and receive the consideration. Just a second. And I receive all the consideration amounts, everything I receive, I will not grant the conveyance. But in RERA, this provision has been curtailed. It says that once a building or a wing, that is, once a phase is totally constructed and you have obtained the occupancy certificate, you means the promoter. Once the promoter has obtained the occupancy certificate, within 3 months, he has to convey the building. Then what happens to the land? It is further provided that the promoter shall execute the conveyance of the entire undivided or inseparable land underneath all buildings jointly or otherwise within 3 months from the date of issue of occupancy certificate to the last building or the wing in the layout. So, in respect of the land, the conveyance will take place once the last building is constructed and the occupancy certificate thereof has been obtained. Within 3 months of that date, the conveyance of the land will be given. So, the first conveyance will be given of the building within 3 months of occupancy certificate of that building, and the conveyance of the land will be given after the construction of the last building within 3 months of receipt of occupancy certificate of that building. Rule 9(2) of MahaRERA rules provides that if no period of conveying the title is agreed upon, the conveyance should be executed within 3 months from the date of issue of occupancy certificate or within 1 month from the registration of the legal entity of allottees, whichever is earlier. One might think, what is that entices the promoter or the landowner for not executing the conveyance? There are several reasons for which the promoters do not convey the property. Like, there can be inter-sale disputes between the owners themselves, or many a times in old buildings, we come across this problem wherein the original owners themselves are not traceable. In some cases, the original owner finds it difficult to get the certificate under Section 230A of the Income Tax Act. In some cases, ULC problem is there. And the most common and the important reason is that the promoter delays or avoids the work of executing conveyance as he wants to retain the control over ownership of the land and the building. What happens is,
the promoter directly or indirectly gets benefited if there is an additional FSI as well as transfer of development rights due to change in law from time to time for the purpose of construction. So he gets a right to construct further if he has if the conveyance has been done, you get the benefit of the FSI. But if conveyance is not done, the owner gets the benefit of the FSI, the promoter basically. Similarly, when flats are transferred, the promoter can ask for a transfer fee. This is usually in cases where the society is also not formed and the registration office tells you get an NOC of the developer. In those cases, they ask you 2% of the value and all such things. Now, is there a remedy if the promoter refuses to convey the property in favor of the rent? In several cities like Mumbai, many housing societies face this challenge. The major problem arises during the redevelopment of society in old and dilapidated structures. Consequently, in 2008, the Maharashtra government introduced the concept of deemed conveyance and published the rules relating to it in 2010. Under the scheme, a society that does not receive conveyance is entitled to apply to the Deputy District Registrar (DR) of Cooperative Societies, who would pass an order of deemed conveyance of the land and the building in favor of the society after verification of documents submitted and upon hearing the parties, that is the society, the developer and the owners. Under the scheme, the DDR has been empowered to execute the conveyance after taking the proceedings summarily. Such a conveyance will be executed by the DDR for and on behalf of the owners and developers. For this purpose, the housing society should file an application as per the specified format and submit it along with the required documents to the district deputy registrar. Upon receiving the application, the competent authority, after verifying the authenticity of the documents and allowing the builder to be heard within a reasonable time but not exceeding 6 months, should issue the certificate for deemed conveyance. Now, what are the documents required? First of all, application in format, which is Form 7 to the MoFA rules. There is a court fee of rupees 2,000. You are required to describe format. An affidavit submitted before the notary or executive magistrate affirming to the same. Then a true copy of society registration certificate, a copy of the development agreement between the landowner and the builder, a copy of legal notice issued to the original owner or the developer for executing conveyance. That means if at all it is not denied to give the conveyance or he has not failed and neglected to give the conveyance, you cannot get the deemed conveyance. So you have to first follow the procedure. You have to first approach the promoter and request him to grant to give you the conveyance. And if he denies or fails and neglects to give you the conveyance, you can apply for deemed conveyance. Contact details of the developer, that is the address, the telephone number, email address, all those things.
Then draft conveyance deed or declaration proposed to be executed in favor of the society. Then copy of non-agricultural order, certificate under ULC Act 1976, building or structure plan by the authority concerned, location plan, IOD, commencement certificate, occupancy certificate if it is there, proof of payment of property taxes, search report of the land, title certificate of the property issued by a solicitor or an advocate, land measurement map or architect certificate, certified copy from a panel architect about utilization of full FSI or leftover FSI, then in the case of a layout, you have to submit an architect certificate, thereby certifying the proportionate FSI which is available to the society. Now, is the DDR bound by some rules? Because the proceedings before the district deputy registrar are basically summary proceedings. Summary proceedings means evidence will not be led, but he has to give an opportunity of being heard to all the parties concerned. Now, the principles to be followed have been laid down by the Bombay High Court in Sukriti Apartment Cooperative Housing Society Limited versus Tirumala Developers and others, recently on 21st March 2022. The Bombay High Court, after referring to several of its judgments, has observed that reading of section 10 and 11 of the MOFA with section 5A would make it amply clear what is to be performed by the competent authority is the duty and obligation which the promoter is to perform in law. That is to convey the title and execute documents according to the agreements. When section 10 and 11 are read together and harmoniously with the preceding sections, it is to be held that the competent authority has to take into account entitlement of all the parties concerned in terms of the agreement executed between them and the promoter. Competent authority cannot permit the parties to pay something that is beyond their agreement and the promoters and other relevant documents. So you can't ask for something beyond your agreement for sale. Your entitlement will be as per the agreement for sale, and the most importantly, as per the agreement between the owner and the developer. So if there are any restrictive covenants in the agreement, or if the original owners have retained any area, then that would apply even to your conveyance. It's basically no one can pass on a better title than what he himself has. Then there have been judgments of the Bombay High Court wherein it has been held that when there are several structures on the land, then each of the buildings, each of the societies are to be given an opportunity of being heard. Then there have been judgments wherein it has been observed that if the earlier occupancy certificate was compulsory, but now occupancy certificate is not compulsory. Still, the courts have held that if the structure is unauthorized or if there is any illegality in the construction, then you are not entitled to get a deemed conveyance. Further, if there are disputed questions of law and fact involved in the transaction, even then the competent authority is not entitled to grant the deemed conveyance. Similarly, if evidence has to be led as to the entitlement of any of the parties, and that has to be decided, then again the competent authority does not have the jurisdiction. All such cases would go before the civil court. In this regard, many a times the question arises that what would be the court fees then?
The Bombay High Court has, as early as in 1982, it has observed that in such cases, the value of the property should not be considered. So it will be merely a declaratory suit for conveyance. Now, the last thing which I would like to touch upon is which affects many people. What is the stamp duty on the conveyance? Because if the whole society is considered, the stamp duty would be huge. In this connection, it is basically Section 4 of the Stamp Act, Bombay Stamp Act, provides that if a transaction is executed in several parts, then the stamp duty on the principal document is only to be considered. Applying the same principle, if all your agreements for sale are registered and or the proper stamp duty has been paid, then the stamp duty on the deemed conveyance will be only 100 rupees. Having said that, even if one of the agreements for sale is not duly stamped, you will have to pay, the society will have to pay the stamp duty in respect of that flat along with the penalty on it, and plus the 100 rupees which are required to be paid. So with that, I would like to end my presentation. If there are any questions that can be asked. Sunil ji? सुनील जी? यस सर. हाँ सर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्वेश्चन सर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पे है, वो एक मिनट ले सकते हैं क्या? एक मिनट. एक तो लेटेस्ट एक क्वेश्चन है. एक मिनट अमर जी. मिस्टर मैं निकाल रहा हूँ. एक सेकंड. नहीं, एक में एडवोकेट सत्यजीत खरे का है, दहीसर से. इज द कन्वेंस डीड इंटर बिटवीन एलिगेट लीगल हायर्स ऑफ ओरिजिनल बिल्डर्स डेट एंड थर्ड पार्टी डिली registered stamp duty paid binding on the society? This is a very good and a very important question. Many a times what happens is the developers, the promoters, what they do is they grant the conveyance in favor of any third party to basically oppose the rights of a society to go for deemed conveyance or other rights. So what the society feels is, now since the assignment has been done in favor of a third party, our rights get demolished. It's not so. If you read the section 11.3 of the MoFA Act, it clearly provides that the promoter or his assignees, once it is said that the promoter or his assignees, it includes the assignees who have been given this conveyance. So you can claim deemed conveyance even from the latest assignee, and your rights are not jeopardized. Okay, next question है एडवोकेट प्रशांत जैन है, गोरेगांव ईस्ट से. What are the documents which should be examining, and what the effective procedure the transfer of the clear market table title and land from developer through? See, basically this depends on case to case basis. Yes. Primarily, you have to see the PR card, you have to see the assessment bills, and you have to see the title, the chain of title deeds. So the CTS plan, the DP remarks, the city survey plan, all those things you have to see. So the primary documents are these documents. The other documents depend upon the case to case basis. Yes.
CHS can obtain title of their land I'll read under out. deemed CHS conveyance. can obtain Yes. title of their land under deemed conveyance by way of eligible certificate from DDR, CS30 under MOFA. My question is this adequate in regard to transfer of title of land from developers and landlords, or there are many more steps which will finally and adequately vest title of land to the cooperative housing society? See, there have been judgments which say that this does not end up giving the title in favor of the society, because this is a summary proceeding. So if at all there are any defects in title, the civil court can decide upon it. Now, having said that, on the second part of your question, that what are the further things required once you get the certificate from the DDR? Once you get the certificate from the DDR, you have to approach the city survey office for getting your name inserted in the proper PR card. Once your name comes in the PR card, firstly you have to get the conveyance deed registered, and thereafter apply to get your name inserted in the PR card. Once your name is inserted in the PR card, then you have to go to the other departments like assessment and all other departments, wherein you have to get your. Once all this is done, it would be said that you have finally become the owners of the land. Now, third question is, what is the importance of proper stamping charges from concerned DDR stamp and registration department? What is the necessity? Can CHS get registration of their conveyance deed without adjudication order? No, without adjudication order, you don't get it. Basically, all your agreements, like I said, all your agreements for sale should be registered. If at all it is not duly registered, due stamp duty has not been paid, you have to pay the stamp duty with penalty. And once all this is done, thereafter the adjudication order comes in your favor, and then you can get it registered. Sir, property card is most important document and evidence of title of CHS. Please guide how CHS can have entered their name in the property card after registration of conveyance deed in their favor. Please throw the light on importance of property card. Like I said, once you get the conveyance, you have to get it adjudicated, you have to get it registered. Thereafter, you have to go to the city survey office and get your name inserted in the PR card. For that purpose, you have to make an application before the city survey office. With that application, you have to give a declaration and declaration cum indemnity. And after that, the city survey office, it will issue notice and they invite objections. If there are any objections, it has to give hearing, and thereafter it can transfer the name, the property to your name. Now, in this regard, I would also like to say there is a Bombay High Court judgment which states that the process of deemed conveyance does not contemplate two stages of hearing. So once the title has been cleared by the DDR, the stamp office, it is just required to do a formality, give a notice, and again the title issue will not be gone into. So there is a judgment to that effect. Now, what is the importance of getting your name in the PR card? Like I said, that the municipal, the planning authorities, they basically see the PR card. So if at all any additional FSI or any additional TDR or other things have to be utilized or the assessment has to be paid, they will ask whether your name is there on the PR card. So if at all your name appears in the PR card, then only you get the benefits of it. So getting your name transferred in the PR card to that extent is very important.
Having said that, I would not say that that is the only document of your title. There have been judgments of the Supreme Court which say that revenue records such as PR card do not entail title to you, but it is one of the documents of your title. Is it scope of DDRCS while deciding application of deemed conveyance, any claim of encroacher or title claim by any legal heirs of previous owner if they object? Please guide scope and authority of DDR on deemed conveyance application under MoFA. Like I said, okay, all such disputes as to title, like tenancy or encroachment, or other things, the DDR does not have any authority to decide on these aspects. The Bombay High Court has in this case held that the DDR can grant a deemed conveyance order, but that will be subject to outcome of the of such proceedings before the small causes court or the city civil court or the High Court, as the case may be. सुनील जी, और कुछ क्वेश्चंस हैं? अमर जी, थैंक यू वेरी मच। अभी तो YouTube पे मैं देख रहा हूँ, YouTube पे अच्छे कमेंट्स हैं, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन कमेंट से आर सुंदर राजन सर देख रहे हैं। हमारे किशोर मृचंदानी, थैंक्स सर, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन एंड वेरी नाइस एक्सप्लेन। मिस्टर एल अनंत नेक्सस अंकल, वेरी यूजफुल वेबिनार। एंड कविता गुप्ता जी हैं, एनबी असर हैं, मोना मेहता जी, नरेंद्र जीत धीमान है, ये पूना से कनेक्ट हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे लग रहा है सवाल जितने थे ले चुके हैं लगभग। अमर जी, यदि आपसे संपर्क करना हो या महासेवा से संपर्क करना है तो मैं आपको नंबर शेयर कर दूं महासेवा के, और आप डीम कन्वेंस हो या प्रॉपर्टी टाइटल से रिलेटेड अमर खन्ना जी से महासेवा के ऑफिस में जाके मिल सकते हैं। महासेवा का नंबर है, अमर जी आप अपना नंबर बता दीजिए ताकि आपकी मेल आईडी पे लोग कनेक्ट कर सके। मैं थोड़ी देर में महासेवा का नंबर 7738281740। और यदि आप महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन अंधेरी लारम सेंटर स्थित जो ऑफिस है, हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी जिस पे लीड करते हैं, तमाम रेरा और रियल एस्टेट और रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट से कनेक्टेड कुछ इश्यूज हो आपका, या आपको फ्री एडवाइस चाहिए, आप मेंबर हो, फ्री एडवाइस चाहिए तो आप सैटरडे को आ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है ऑफिस का 022-425-51414 4255-1414। इस नंबर पर आप ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं। सैटरडे को फ्री एडवाइस रहती है। और सेल्फ रीडेवलपमेंट का जोर मुंबई में काफी हो रहा है, तो इससे रिलेटेड आप अमर खन्ना जी से भी मिलना चाहें तो उनका नंबर शेयर कर दिया। और मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप से आप लोगों को ऐड होना है, मेरे जो अपडेट्स है हमारे लाइव शोज वगैरह जो है उससे कनेक्ट होना है, तो आप मेरे नंबर पर भी व्हाट्सअप अपने सिटी का नाम लिखे, अपना नाम लिखे, आप कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नंबर है 9920378133। दोस्तों आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। आप हमेशा कनेक्ट रहिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा आप इस नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म में लोगों को ज्यादा अवेयर करें, एजुकेट करें। ये हमारा MNS मीडिया न्यूज सर्विस का और महासेवा का संकल्प है। इस संकल्प को आगे बढ़ाइए इस वीडियो को शेयर करके। और अभी के अभी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें ज्यादा ज्यादा। और महोत्सव टीवी चैनल पर तमाम लोग देख रहे हैं मुझे, तो मेरे नंबर पर या अमर खन्ना जी से आपको इस रिलेटेड सेल्फ रीडेवलपमेंट या कन्वेंस से रिलेटेड कुछ क्यूरीज हो तो आप जरूर मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें या फोन करें। अमर खन्ना जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।